Namaste. Welcome to KP Souls. Hi friends, we are continuing with our weight loss series. आज हम अपने इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन के बारे में बताएंगे विच इज़ प्लैंक विच एवरीवन प्रैक्टिसेस. तो हम लोग आपको मेनली इसमें मिस्टेक्स जो है ज़्यादा करके मिस्टेक्स क्या करते हैं, हाउ व्हाट इज़ द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग अ प्लैंक एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग अ प्लैंक वी विल शो यू इन दिस वीडियो. ठीक है. सो फर्स्ट वी आर टेकिंग 2 ब्लॉक्स. ओके. प्लैंक उतना अच्छा होता है जितना आप एलिवेटेड रखोगे अपने एल्बो को. So that's why we are using 2 blocks. Okay. Hazel, can you go in plank posture? Yes. So first we will highlight the mistakes which people normally do in plank. So as you all can see, ज़्यादा करके लोग क्या करते हैं, they take their heel up. plank में they know to take their heel up, but वो hip को बहुत ऊपर रखते हैं, which is not a right posture. Okay. तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, आप वॉल के पास पैर को टिका सकते हो एंड लेग शुड बी स्ट्रेट, सी लाइक दिस. नाउ व्हाट यू नीड टू डू टू टेक योर हिप डाउन, यू नीड टू पुश योर शोल्डर अहेड ऑफ योर एल्बो. एल्बो के इन लाइन होना चाहिए या एल्बो से थोड़ा आगे होना चाहिए. सेकेंड थिंग. नाउ थर्ड थिंग, जस्ट लिफ्ट योर दिस, फोकस ऑन योर शोल्डर ब्लेड एंड ट्राई टू लिफ्ट योर शोल्डर ब्लेड अप. जैसे आप शोल्डर ब्लेड अप करोगे तो आपका पूरा प्रेशर, यू विल फील द प्रेशर ऑन योर कोर, ऑन योर शोल्डर ब्लेड. सो दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग प्लैंक. इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, बट डेली प्रैक्टिस करने से आप इसको काफी देर तक होल्ड कर पाओगे. ओके, रिलैक्स. So we'll just show again. Yeah. If you have to go in directly, how do you get into the plank posture? For me, the block was little further. So I am adjusting the block as per the distance I need, right? You adjust the block, then you place your elbow on top of yes. it. Okay, so you get a good support, and then you rest your leg on the wall. Once you do that, try to push your shoulder in the front as I'm doing and lift. Yes, and always keep awareness of your shoulder blade. ओके, शोल्डर ब्लेड को आपको ऊपर की तरफ पुश करना है हमेशा. द मोर यू पुश, द मोर यू फील द इंटेंसिटी ऑफ द प्लैंक. सो यू कैन फील द नाइस इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर कोर मसल्स. आप इसको थोड़ा और आगे जाएंगे तो इसको और थोड़ा आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो. तो शी हैज टेकन अ ब्लॉक लिटिल बिहाइंड. अगर वो आगे लेंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी उनका बढ़ जाएगा. If we practice it daily, Jeet, if you can tell what are the benefits when we practice it daily, how is it going to help us? Plank is a very important posture to strengthen your core. The most important thing, once your core is strengthened, तो आपकी strength based जितनी भी workout है, that will become quite comfortable. आप उसमें काफ़ी comfortable हो जाओगे. Secondly, it also develops your shoulder strength. जो भी हम लोग स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट करते हैं, यू रिक्वायर अ गुड स्ट्रेंथ ऑफ योर शोल्डर. तो प्लैंक कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने से आपके शोल्डर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे एंड विच विल हेल्प यू टू फर्दर प्रैक्टिस एडवांस पोस्चर. करेक्ट. तो वो बेनिफिट है. अभी हम लोग ने जो आपको प्लैंक बताया है, वी हैव डन विथ एल्बो. अब हम लोग हाथ पे, पाम पे कैसे कर सकते हैं, विल शो यू दैट. यस जी. ठीक है. सो फॉर दैट वी कैन डू डायरेक्टली ऑन डाउन. प्लेस योर पाम. The most important thing is your hand. Mostly plank करने के टाइम लोग ऐसे रखते हैं हाथ को, like this. Just a second, Hazel, can you? Like this. तो इसमें क्या होता है, आपका फिंगर जो है वो इनवर्ड है. This is an internal rotation, which is not the right posture to do. तो आपको क्या करना है, first finger should always be straight, like this. First finger should always be straight, both sides. ये बहुत important point है. You need to take care of this and then you need to practice plank. Like if you, Jeet, if you can show, then I will help them with Yes. the difference. If you see now, when the fingers are inward, the elbow is Rotating on the inside. Yeah. Right? If you can see this. Even shoulder, see, you can see shoulder is rotating inside like this. But once I do it straight, this is straight,
and shoulders are free. So even here elbows are facing each other, but it is not rotating inside. Inside. Elbows are facing each other, and that is the ideal position for practicing plank. Okay, like this. Chalo, we'll do. Leg. Again, I'll take the support of the Yes. wall. Initially, you need to practice with wall, and yeah, perfect. And focus on your shoulder blade. Yes. So you can see, if she is not involving her shoulder blade, relax your shoulder blade. Her hip is getting sync. But the moment she involves her shoulder blade, hip gets lifted, and core get involved to a much effective way. And relax. So guys, You'll please- feel all possible vibrations which happen, and that is natural. So be relaxed. Don't worry, because as and when you build your strength, it will get better. But of course, that vibrations will happen. It is just like initially it will happen. So Yeah. just hold for 10 seconds initially, then slowly and gradually increase it to 15, 20, and try to hold it for 1 minute. But while practicing daily, you will feel that your core is getting strong. You will feel yourself very strong. That's the reason we require the blocks initially, because with the blocks it gives a good elevation and good support, and you can hold the posture for few more seconds, and then of course you can do it directly on the ground as well. That's your choice. So you can choose either of it, and you can start the practice. So guys, hopefully this was a helpful video for all of you. Please practice plank in a proper way, and it's really very effective. Thanks, and watch us for more videos. Yes, and before we end this session, please put in your comments that how many seconds you all could hold. Whether 5 seconds, 10 seconds, a minute, 2 minutes. I would be much more interested in that. So please put your comments, and then probably we can in the future take a challenge, and we all can get together and do a plank session together. We can. Thank you very much. Thank you.